Hello students, welcome to Oliveboard. I'm your faculty Rahul Yaduka, and again we are meeting on Wednesday 8 p.m. with a fresh new session wherein we usually discuss certain important news of the previous week, and we have also been trying to work upon something related to descriptive answer writing practices. So first of all, confirm if my voice is audible to all of you. All right, so I think the voice is quite clear. So it's been a while, students, that I have discussed answer writing strategies with you. For last, I think, eight odd sessions, we are largely focusing on important events and we are trying to discuss that. In the initial 4 or 5 videos, I used to strike a balance between the content and the approach towards answer writing. So I thought, why not today we take this up again and do something related to answer writing, a kind of revision after having discussed so many topics. So let's do that. Before we go to discuss the answer writing practices, students, one very important announcement I had to make, and that is related to the mega marathon session that Olive Board is going to organize on this Saturday and Sunday, that is on 18th and 19th Feb, right? So these are going to be two non-stop 3 hour session wherein the senior faculties of Olive Board platform will try to engage with all of you pertaining to, let's say, some MCQs or some current affairs and so on and so forth. So in this video's description, there will be links provided to that. Please go to that and register. Don't miss this opportunity to have a blockbuster kind of session wherein within a non-stop 3 hour session, you get to revise so many questions, so many topics. Thank you. Yeah, so what we are going to discuss today is decoding answer writing, right? Decoding answer writing. So why I am saying that we have to decode the answer writing? This is because our experience with this uh, competition sector, or the thousands and thousands of students whom we have met over time, their queries, their answer writing practices we have seen. This gives us a sense, the faculties, that for students, answer writing is one of the areas where they are not very comfortable with. And this is probably because a large part of preparation that we do is focusing on the content, what to read, what all to cover, what resources to refer, so on and so forth. But at the end of the day, all of this preparation has to culminate in the examination answer writing. Either you are going to solve MCQs or you are going to write subjective answers. So, whatever preparation you have done, the test of that preparation ultimately happens in a answer. Don't look at the entire paper, also look at one single answer. If you do reasonably good in all the individual answers, ultimately your uh, overall performance will be good, right? So nobody knows actually, because nobody knows what gives marks, right? Because that is not shared with the students in universities, in colleges, in schools. We are given back our evaluated answer script so that we can know how do they do marking. But in case of competitive examinations, this is not there. Hence the word decode. We have to assume, or we have to analyze, we have to predict what are possible reasons students don't get good marks, or what are the reasons, what is the extra thing that certain students do that brings them good marks, right? So if I articulate
our entire experience of close to a decade, we reached to this conclusion that answer writing is not only about content. It's not only about your knowledge. It's not only about understanding, right? It is not only about that. Now, it does not mean that it is not at all about content. Hence, it is important to know what role is played by content, to what extent content matters, and what more is required other than content to write a good answer. This thing should be crystal clear in your mind, right? Students will be there who are not very clear in this idea. Many students will say जिसका कंटेंट अच्छा होता है उसको नंबर आ जाते हैं, बाकी चीजें बकवास है। दूसरे स्पेक्ट्रम पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस पे जो आए लिख देना, सजा के लिखना है, अंडरलाइन करके लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। What I personally believe, none of these approaches actually work. At the end of the day, it is an examination based on knowledge. So nobody is right to say that knowledge does not matter. But ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर देंगे लेकिन उसको पढ़ना मुश्किल हो जाए, उससे इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाए, इवेलुएटर के लिए चैलेंज हो जाए, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सो ऑलवेज हैव अ बैलेंस इन द माइंड, right? And that is what I will explain to all of you today. So these are the 5 things which I count as challenges to answer writing. चुनौतियां किसे कहते हैं, ठीक है? So first is tapping the demand of the question. What exactly a particular question is expecting from you? How do you know that? Now ऐसा नहीं है कि आप simply question को पढ़ लेंगे and you will be clear what is being asked. It is about interpretation also. How do you interpret the question? Sometimes it may happen that you are running out of time in an examination setting and you misinterpret the question. पूछ कुछ रहा है, आप उससे tangentially लिख रहे हैं. Now, you will not be awarded good marks in such cases where you go tangentially off. So, what we call to the point answer writing. To the point का मतलब है write what is being demanded. बट उसके पहले एक चुनौती है कि पता कैसे चले कि क्या डिमांड किया जा रहा है, ठीक है? सो वन थिंग इज दिस. नेक्स्ट, सपोज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डिमांडेड एंड यू नो व्हाट टू राइट. देन कम्स द सेकंड स्टेज ऑफ चैलेंज, हाउ टू स्ट्रक्चर द कंटेंट. उसको आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कहाँ क्या लिखेंगे, किस एस्पेक्ट पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है. थर्ड is presentation of the content. How do you present it? Those students may agree on what to write, what is being demanded, but still somebody presents in a more graphical way, let's say. Comparison जहाँ दिखाना है, one is writing in paragraph, one is writing in tabular format. So these are two different kind of presentations. Somebody is writing in continuous paragraphs without changing the paragraph also, long paragraphs, and somebody is writing small paragraph with subheadings. So these are different ways of presenting the same content, right? तो यहाँ पर भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि how to present the content. Two very important challenges or constraint I would say is time limit and word limit. For 2, 3 you have to do. You have to understand the demand, you have to structure the content, you have to present the content. But all this you have to do not in an endless time. There is time limit and there is word limit. आपको एक तय समय के अंदर ये सब कुछ करना है और इसको करने के लिए आपके पास वर्ड भी लिमिटेड है. सो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए यू हैव टू राइट एन आंसर. So let's take one by one, tapping the demand of the question, right? So if you look at the this part, how to tap the demand of the question, one toolkit I would give you, and that toolkit is to start with, make a habit of reading the question with underlining keywords. जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक हैबिट बना लीजिए कि पेन रख के पढ़ना है और जहां जहां कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है. जैसे आरबीआई कीवर्ड है, बैंकिंग कीवर्ड है, एम्प्लॉयमेंट कीवर्ड है. इस तरह के कीवर्ड को जब आप अंडरलाइन करेंगे, देन यू विल बी नोइंग this question is related to what concept or concepts.
क्या ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या ये किसी और चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू नो कि ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है, और इज इट अबाउट इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, what it is exactly trying to do, right? Second, there are two types of demand that you should understand while reading the question. One is explicit demand and one is implicit demand of the question. What is explicit demand? Explicit demand means that is something which is very clear कि ये तो पूछा ही जा रहा है. For instance, uh, why do you think we see agriculture productivity being less in India? इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों कम है? नाउ इम्प्लिसिट डिमांड का मतलब है, एक्सप्लिसिट डिमांड का मतलब है कि क्यों कम है. आप ये लिस्ट करें फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच एग्रीकल्चर डिमांड इज लो. नाउ इम्प्लिसिट डिमांड ये है कि आप साथ ही साथ कुछ सुझाव भी दें. जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां कोई चैलेंज की बात है, then it is expected out of you. It is not categorically written, but it is expected out of you that you also write certain way forward, certain solutions to it, right? So when you address the explicit demand, that is something that you must be do. But when you do implicit demand also, that will add value to your answer. इस कैटेगराइजेशन को आपको अच्छे से समझना है. टू द पॉइंट लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्लिसिट डिमांड को एड्रेस ना करें. ठीक है, थोड़ा आपको, इसको हम कहते हैं पेरीफेरी ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का एक सेंटर है और थोड़ी सी उसकी सर्कमफेरेंस पे भी जाना है. जिन चीजों को आप थोड़ा टच कर दें, इलेबोरेटली ना जाएं. Address in greater detail what is categorically asked and touch upon those aspects which are related to the question. ठीक है, इस बैलेंस को आपको बनाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट कोर डिमांड को आपने एक पैराग्राफ में लिखा और इम्प्लिसिट डिमांड आप 3 पैराग्राफ में लिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी क्लियर विथ. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग डिमांड वर्ड्स. व्हाट आर डिमांड वर्ड्स? आप देखते होंगे क्वेश्चन के बाद लिखा रहता है डिस्कस, एग्जामिन, इलेबोरेट और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा होता है. सो इसको हम कहते हैं डिमांड वर्ड्स. ये आपको क्या करता है? डायरेक्शन देता है. ठीक है, एग्जामिन का अलग मतलब है और डिस्कस का अलग मतलब है, इलेबोरेट का अलग मतलब है. तो इन चीजों के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन दैट whether it is examine or whether is it discuss, whether is it elaborate, you write in the same way. According to these things, you will have to calibrate your direction in the answer writing. You may look at these demand words on Google. If you don't find satisfactory answers, do write in the comment box that if you want me to take a session on this, I will try to figure out. Next. Now, once you're clear that demand क्या है question का, it is clear to you, then comes the second thing, structuring the content. आप कैसे structure करें? So, what all do we do when we actually structure the content? First is deciding the flow. And what does decision mean? Deciding the flow means what should come when. पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है. दिस इज फ्लो. फॉर इंस्टेंस आपसे पूछा गया डिस्कस चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है, और सबसे पहले आपने लिख दिया कि सरकार को ये करना चाहिए. नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट इन द प्रॉपर फ्लो. फ्लो में सबसे पहले क्या होगा, आप एक इंट्रोडक्शन लिखें कि एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका डेटा थोड़ा बता दें ताकि एक सेंस समझ में आए हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन इंडियन इकोनॉमी. देन यू शुड गो टू डिस्कस रीजंस कि क्यों हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड देन कम्स द सॉल्यूशन. सो दिस इज द प्रॉपर फ्लो कि किस क्रम में आप किस एस्पेक्ट को लिखेंगे. ठीक है, देन लेट्स डिस्कस दैट. स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन. जब भी आप स्ट्रक्चर करते हैं तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड कि हम इंट्रो में क्या लिखें. बहुत यूजुअल सवाल है. नाउ स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज it gives the first impression of the candidate to the examiner. आप पहले ही लाइन ऐसा लिखते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है या जो गलत है या
क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है या इररेलेवेंट सी कोई बात है, तो डेफिनेटली वो पुट ऑफ करता है। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ चीजें जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रीसेंट डेवलपमेंट मेंशन कर दें। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन है बैंकिंग रिफॉर्म्स पे, तो अगर प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ता कुछ कहा, पिछले महीने कुछ कहा, सो यू कैन राइट दैट and then come to the actual answer. So what does it do? It puts topic in the perspective. इससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा that you are up to date with the recent developments. आपको चीजें पता हैं, आप टच में हैं, आप जो recent developments है उसको अपनी थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टाइल ये है। दूसरा हो सकता है कि आप किसी एसेंशियल फैक्ट और फिगर से शुरू करें, to start with some fact and figure. For instance, if there is a question on, let's say, agriculture, you can simply write 50% of India's population is involved in agricultural sector, but only 15% of GDP comes out of it. So this is a very important fact and figure. It puts real scenario of agriculture sector in India up front. ठीक है, अप्रोच एक ये भी हो सकता है। तीसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि यू स्टार्ट विद सम कोटेशंस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस देयर इज सम क्वेश्चन ऑन, लेट्स से, finances of India, or let's say if you talk about left wing extremism in India. So कभी अगर गांधी ने कुछ कहा या कभी किसी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने कुछ कहा या मनरेगा के बारे में क्वेश्चन आता है, तो वर्ल्ड बैंक हैज सेड दैट इट इज एन स्टेलर एग्जांपल। सो ये कोट अनकोट आप लिख सकते हैं। तो इससे अगेन इट पुट्स थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। एग्जामिनर को भी कम्युनिकेट होगा दैट यू नो and you are well versed with what is being said in the global economic forums also. So these are different varieties of writing a good introduction. Next comes the body, wherein you directly address the core demand of the question which is being asked. Or next paragraph body mein you can write about some implicit demand of the question that we have discussed in the preceding slide. Then comes the conclusion. Here also, students, some things are there which should be kept in mind, I think. What is expected in a conclusion? First of all, don't introduce any new fact in the conclusion which you have not discussed in intro and body. आप आंसर लिख रहे हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ नहीं आए और सडनली आप एक नई बात कह रहे हैं कंक्लूजन में, नहीं करिए ऐसा। कंक्लूजन मीन्स टू कंक्लूड, आप अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। तो जब आप बात शुरू करते हैं तो आप नई बात करते हैं ना, बात खत्म करते समय यू टेपर इट ऑफ, यू कंक्लूड, यू समराइज। सो फर्स्ट थंब रूल according to me is don't introduce new facts in the conclusion. Second, be optimistic. Don't write hopeless scenario in the conclusion paragraph that the condition of agriculture is very bad in India. Don't do that. You can do it in the body somewhere. At the end of the day, you have to be forward looking. Your attitude and your approach should be forward looking. Don't end with a critical tone. शिकायत के लहजे में या आलोचना के लहजे में अंत मत करें। शुरू में आ जाए कहीं, but compensate that with a way forward. That having discussed the challenges pertaining to agriculture in India, or having discussed challenges pertaining to unemployment in India, these are certain things that government is doing and we should do. Again, इसमें भी दो चीजें हैं. There must be some steps that government has already taken, and there may be some steps which you want to suggest. ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि कंक्लूजन में भी पहले उन चीजों को लिखना है जो सरकार ने किया है. What does it reflect about you? It reflects about you that you look at positive aspects, you look what government is doing, and your attitude is not to point out only mistakes or what something could not be done. Rather, you look at what has been done, what other people have been doing, and what more needs to be done. So this is a more uh, humble approach. It shows humility from your end that you do recognize that it's a very challenging job, but still government is trying to do. But you suggest some more solutions. So in that case, you become a problem shooter kind of person. कि आपका ध्यान हमेशा जो है समस्या की समाधान की तरफ रहता है. ठीक है. So these are certain things pertaining to conclusion. Next comes how do you present the content. ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है,
क्या कंटेंट जाना है उसमें, फ्लो क्या होगा, बट देन कम्स हाउ टू ब्यूटीफुली प्रेजेंट इट. नाउ व्हाई प्रेजेंटेशन मैटर्स, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है. व्हाई प्रेजेंटेशन मैटर्स? प्रेजेंटेशन मैटर्स बिकॉज examiners don't have infinite time. They are human beings. So aesthetics is important. If your answer is very clear, if your answer is quite easily readable, if examiner does not have to put too much effort into your answer evaluation, then it is a general human psychology that they will feel happy about your answer. Right? होता है ना कि जिसकी आंसर हैंड राइटिंग अच्छी होती है, उससे टीचर्स ऐसे ही खुश रहते हैं बचपन में. क्यों? क्योंकि आसान हो जाता है जॉब. कोई भी आदमी किसी का काम अगर आसान बना दे तो कुछ ग्रेस मार्क्स तो उसको वैसे ही मिल जाने हैं. ठीक है. बस इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेजेंटेशन देना है. ठीक है. सो फर्स्ट डिवाइड सब सेक्शंस इनटू सूटेबल हेडिंग्स. क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ सपोज यू हैव टू राइट लेट्स से 500 वर्ड्स एंड यू आर राइटिंग इन वन पेज एंडलेसली. नाउ हाउ विल आई नो वेयर टू फाइंड विच आंसर, कौन सा पॉइंट आपने कहाँ लिखा है? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डिलिनिएट. द वर्ड इज डिलिनिएट. आप क्लियरली चंक्स में तोड़ दें कि पहले मैं इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका डेटा दूंगा, उसके बाद वाई इन्फ्लेशन इज देयर वो लिखूंगा, उसके बाद व्हाट गवर्नमेंट हैज डन वो लिखूंगा, एंड देन आई विल राइट व्हाट मोर नीड्स टू बी डन. तो एकदम बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपने क्या लिखा है. सो हाउ डज इट हेल्प? मेनी अ टाइम्स आई विल सिंपली लुक एट द हेडिंग and I'll get impressed कि suppose this guy knows what are the subsections that need to be covered, then he obviously knows what is going into that. है ना? जिसको यही नहीं पता है कि क्या aspects हैं, वो heading देगा कैसे? ठीक है? So this is the significance of heading. Now, don't provide headings only, try also to underline it. मुझे पता तो चले कि कहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कहाँ पर sections change हो रहे हैं. So it's important that you underline headings. Then you underline keywords also. Suppose you write Manrega has been called an stellar example of welfare scheme by World Bank. Now you underline this stellar example. The moment I, as an evaluator, look at a stellar example being underlined, I will simply know what you are going to write. आगे पीछे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग सब कॉम्पिटिटिव सेक्टर में हैं, सब जानते हैं कि स्टेलर एग्जाम्पल एक बार यूज हुआ था. ठीक है. या somebody says single मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. सबको पता है मनमोहन सिंह ने नेक्सलिज्म के बारे में कहा था. कोई आगे पीछे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इस तरह की चीजों को अगर आप अंडरलाइन करते हैं, सो यू attract the attention, you navigate the attention of the evaluator in your favor. Next, use a judicious mixture of paragraph and bullet and tables. Now, not everything needs to be written in paragraphs. जहां आप explain कर रहे हैं वहां पैराग्राफ ठीक है, लेकिन सपोज आप लिस्ट जहां कर रहे हैं कि देयर आर 4 types of banks. Now that is not supposed to be written after giving comma, this bank, that bank, comma, comma, writing bullets 1 2 3. So this is how you look at the reports. Any government report जहां भी लिस्टिंग की जाती है वहां बुलेट्स डाल दिए जाते हैं, जहां एक्सप्लेन करना है वहां पैराग्राफ है, जहां पर कंपैरिजन है, कमर्शियल बैंक है लेट्स से और आरबीआई है, और एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, होलसेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, टेबल फॉर्मेट इज वेरी सुटेबल. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंटेंट you have to present at certain time, accordingly you should choose the presentation style. ठीक है. Now some suggestions on the content. So structure we have done, presentation we have done, decoding the demand we have done. Now content में हम क्या better कर सकते हैं? Now generally it's about economic and social issues जिन area में हम बात कर रहे हैं. So many a time students say something, let's say inflation in India is very high. Now this is not a good statement from economic perspective. Bank upon data. Bank upon data. बैंक अपॉन डेटा का क्या मतलब है?
that wherever you write something, suppose you make a claim that inflation इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, 2% है, 4% है, 10% है, 1% है, क्या है? सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डेटा है, लेटेस्ट डेटा, वो आपके साथ अपडेटेड होना चाहिए, पहला काम। सेकेंड, इफ एनी सेक्टर के बारे में सरकार ने कोई रिपोर्ट लाई है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में हो या इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हो, अ, हमारे ग्लोबल ट्रेड के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में भी हो, या पहले कोई रिपोर्ट आई है, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट है ना, इस तरह की कोई भी स्टडी हुई है, कोई भी सरकार ने रिपोर्ट लाई है, तो आप उसके मेंशन कर सकते हैं दिस रिपोर्ट सेज दिस, और इसका जो समरी है आपको ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, या आप कहीं और भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। whatever major reports come in the public domain, there are different institutions, coaching institutions, which provide a summary of these reports. Or PRS Legislative is there. You can also have a look at that website. Next is indices. Global इकोनॉमिक इंडाइसेस होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उनका क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट क्या है, पॉपुलेशन इंडेक्स क्या है, तमाम चीज़ें हैं, इनका जो डेटा है आप लेटेस्ट डेटा अपडेट करके रखेंगे। इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तमाम आरबीआई है, एसबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, then you have IMF, World Bank, World Trade Organization, WHO, UNO, so many institutions are there. So जिस भी एस्पेक्ट पर वो कोई बात कर रहे हैं, अगर उस एस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है, then you can borrow कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है? Then cite eminent commentators. Who are eminent commentators? जो किसी बात पर बात करते हैं. Suppose इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक कैसा होने वाला है अगले साल, सो वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा, आईएमएफ ने कुछ कहा, दीज आर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई ने कुछ कहा, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और देयर मे बी सम इकोनॉमिस्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, लेट्स से अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, इस तरह के लोग अगर कुछ कहते हैं, आप एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं, तो you can incorporate those into your answer, because what Amartya Sen says matters, what me and you say don't matter, ठीक है? So try to harness that knowledge, their personality cult for your answer writing. Next, mention relevant laws, schemes, policies. Again, let's say you're talking about banking sector. So अगर कोई नया लॉ आया है, या कोई नई स्कीम आई है, नई कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने, and the relevant of that discussion exists in that particular context, then you can borrow that into your answer, ठीक है? एक बार रिकैप कर लेते हैं शुरू से. So first of all, reminding again, this Saturday and Sunday, 18th and 19th February, we have non-stop 3 hours mega marathon session by Oliveboard faculties. Provided in this video's description, you will find links to them. You can have a look and benefit from it, and also share with other students. First of all, we have seen what are challenges pertaining to answer writing, and we have talked about tapping the demand, structuring of content, presenting the content, time limit, and word limit. While talking about tapping the demand of the question, I have suggested all of you that you should underline the keyword when you read the question, and also try to see what are certain implicit and explicit demands and how do they differ, what proportion of weightage you should give to each of them. Then you identify demand words like discuss, examine, elaborate, and depending on the particular keyword, particular demand keyword, you should provide necessary direction to your answer. Then comes structuring of the content, wherein how you decide the flow of the subsections, पहले क्या है, बाद में क्या है, what makes a good introduction, how do you write the body, and what are certain do's and don'ts related to your conclusion. What are things you should not do in a conclusion? What are the things that is suggested in a conclusion? How you should make a good presentation by dividing subsections, suitable headings, underlining of subheadings and keywords, and a judicious mixture of
paragraphs, bullet, and tables. And finally, uh, by incorporating these data, report, indices, institutions, significant statements made by eminent commentators, laws, schemes, policy, etc., you can enrich your answer. If you have not done till now, our new regulatory YouTube channel is dedicated. Oliveboard is created. You can subscribe the channel on which you're watching this particular video. We also have our own app. You can download that from Play Store and share with other students also. So I hope you liked today's session. I deliberately wanted to avoid any discussion of any topic today and focus only on answer writing. Please let me know if you want me to uh, make similar kind of videos on any uh, on answer writing anymore, or is this thing amply clear? If you have any queries pertaining to today's video, you can write in the live chat box. वन थिंग जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको डिमांड वर्ड्स इलेबोरेट डिस्कस इस पर जो अगर डिस्कशन है इफ यू डोंट फाइंड ऑन गूगल then you can mention here. I'll try to make a separate session for that. And finally, I request all of you to join non-stop mega marathon session on Saturday and Sunday. So thank you so much, students. I hope you liked the video. Thank you so much.